मुझे पता था मेरे को बस सुपरस्टार बनना है, मुझे पता ही नहीं कैसे होता है कोई आइडिया नहीं है, कोई मतलब नो गाइडेंस। बस देखा शाहरुख खान के इंटरव्यू वगैरह, अरे अपने को भी यही बनना है। आई डिडंट नो हाउ टू गिव एन ऑडिशन, देयर वर पीपल देयर इन दैट रूम मच मोर presentable and experienced with this process. मुझे audition देना भी नहीं आता था. Wherever I used to go, I used to meet people, hang out with other actors who were also in the same boat. वो लोग सब बहुत ही डर के और ऐसे ना, they were all behaving like robots and they all spoke the same way. Okay. So I was like, यार ये क्या है? I am not feeling at home. Like at home. I've always stood out. ये मुझे ना किसी फेक तारीफ करने नहीं आती, शायद मैं इसीलिए एकदम अलग से दिखता हूँ। मैं पार्टी वार्टी नहीं करता, मुझे ऐसा लगता था कि मैं करूँगा क्या वहाँ जाके, तो वहाँ जाके मैं अपने डाइट को क्या ऐसा रेड बुल पीता था। आई डिड दैट बट देन आई अंडरस्टूड दिस इज नॉट माई स्पेस, आई कांट डू स्मॉल टॉक। एक्चुअल में अगर आपको किसी के साथ नेटवर्क भी करना है, यू वांट टू कनेक्ट विद समबडी, इतने शोर में आप कैसे, तो वहाँ पर कास्टिंग तो नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पार्टी से काम नहीं मिलता, किसी को मिल रहा है तो भाई ठीक है, उसको सही है। Hi, this is Siddharth Shukla from Take One Film Me, and today I have with me, well, someone very natural, an all-rounder who knows everything. Tushar Khanna, very warm welcome. Thank you. क्या चल रहा है? बस काम। By the way, I have to tell you, Tushar is so multifaceted कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जाने के बाद ना मैं स्किल सीखने वाला हूँ 3-4। मुझे बहुत ही ऐसा फीलिंग आ रही है कि ओ शिट, अभी आई स्टिल एनीवे हैव अ लॉट टू लर्न, बट अभी मुझे सडनली ऐसे एक तरह अंडर अचीवर टाइप फीलिंग आने लग गई है विद यू, बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो योर शिट, यू नो योर स्टफ. I mean, yeah, I've been by myself since about 12 years. 12 साल? When did you shift in college, I was by myself in a different city. हाँ. So I had to learn a lot of things by myself because where I wanted to be and the people I wanted to be around and compete with, they were very skilled and with big teams around them, very skillful teams. So I didn't have the means to hire those teams. In order to make me the person I wanted to be. So I became a one-man army, not by circumstances. Not by choice, actually. Yeah, by circumstances. बनना पड़ा. Yeah, slowly I had to like learn every skill in order to make myself into that person I wanted to be. And YouTube helped me a lot of self-help books and watching all the actors' interviews and other people around them also, so I learned everything little by little. When did you shift to Mumbai? In 2015. 2015 मतलब कोविड से 5 साल पहले. Yeah. आते ही मतलब आरामनगर का पता किसने बताया था? रामनगर का पता, so I came here because I got an ad. Okay. Opposite Sonakshi Sinha. Which one is it? डाबर गुलाबरी का. हाँ. तो मैंने बस अपने बैरी जॉन का कोर्स खत्म करा था दिल्ली में. हाँ. एंड कुछ फोटोज करवाए थे, तो प्लान कर रहा था कि कैसे बॉम्बे आएंगे, पैसे इकट्ठे करने की बात चल रही थी. सो माय फैमिली वाज वेरी स्केप्टिकल. यार मोस्ट इंडियन फैमिलीज, यू नो कि यार इट्स अ वेरी वेग ड्रीम टू हैव वेरी नॉट अ वेरी स्टेबल प्रोफेशन. Lot of uncertainties. Also, when you don't know anyone in the business and in the city, it's very difficult. The only things they knew about this industry was of the magazines, Filmfare magazine and Stardust magazines, and interviews from people. I know. That was the only information even I had. No first-hand introduction to anybody in this city. तो उनके लिए बहुत वेग था. कहता है यार तू जॉब कर, पैसा कमा, फिर तेरे को अपना शौक पूरा करना होगा तो चले जाना अपने आप. व्हाटएवर स्ट्रगल करना और ये जो होता है लाइक टू कम टू द सिटी एंड डोंट नो कहाँ रहेगा, किससे मिलेगा, कहाँ से क्या काम करेगा, वाज वेरी वेग. स्पेशली इंडियन फैमिलीज में बड़े प्रोटेक्टेड होते हैं. तो बहुत ज्यादा पैम्परिंग मिली होगी. सुनकर तो तू अकेला करेगा क्या वहाँ पर, तेरे को कोई नहीं जानता, तू कहाँ से कौन फिल्म तेरे को लेके बैठा है, कोई वेट कर रहे हैं ये तुषार प्लीज. अभी तू बस फ्लाइट से लैंड किया और बस अभी यहाँ से सीधा धर्मा के ऑफिस.
ऐसा नहीं होता I है know. बिल्कुल भी. बट मेरे साथ कुछ फिर भी बहुत ही डेस्टाइन सी चीज़ हुई थी. सो आई जस्ट गॉट माई फोटोज डन एंड वो फेसबुक तब काफ़ी पॉपुलर था. तो फेसबुक पे जिन्होंने मेरी फोटोज़ की थी, सुबोध दास फोटोग्राफर थे, उन्होंने मुझे भेजने से पहले वो फोटोज अपने पेज पे अपलोड कर दिए. अच्छा. So he had a lot of people following him because he was from like you know the casting directors to everything. मेरे को ये concept पता ही नहीं था. कास्टिंग डायरेक्टर, मेरे को कोई पूरा idea प्रोसेस नहीं, कोई कुछ प्रोसेस नहीं का आइडिया नहीं था. Yeah. मुझे पता था मेरे को बस सुपरस्टार बनना है. बस मुझे पता ही नहीं कैसे होता है. Love it. कोई आइडिया नहीं है, कोई मतलब नो गाइडेंस. बस देखा शाहरुख खान के इंटरव्यू वगैरह, अरे अपने को भी यही बनना है यार, यही चाहिए. So I got a random message on my Facebook that we want to cast you opposite Sonakshi Sinha in Dabur Gulabari ad. I was like, यार ये क्या है? You know, randomly. So I डर was भी like, लगता है रियल है या नहीं है. हाँ मुझे लगा फेक है. हाँ. एंड सच बताऊं उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि फेक चीजें भी होती है, स्कैम भी होते हैं. I was very naive. I was about 20 years old, about 19 years old. I didn't know a lot of things about the city or how the world also works. I came from a very protected background and family, very middle class, simple mentality. Like you know, Yeah, I know. where white Like is white. Proper sweet Punjabi families जो होते हैं. I came from that culture. Yeah. तो मुझे लगा सभी अच्छे ही लोग होते हैं. तो मुझे लगा ही नहीं था कोई मेरे साथ स्कैम भी क्यों करेगा भाई. Yeah. मैंने क्या किसका बिगाड़ा, क्या ही करे, you know, like that. तो वो first hand experience to come in this world was also when I came to the city. So anyway, I came to the city and I shot the ad the next day. Oh. And I got about like 25,000 I got for the ad. And छोटा सा काम था मेरा, माला पहनानी थी मुझे सोनाक्षी सिन्हा को and smile. That's it. So I was like, wow, इतना बड़ा set है and I got a vanity. तो काफ़ी फीलिंग आई मुझे ऐसा कि यार मेरे लिए तो मतलब ये सिटी वेट ही कर रही थी. वो एक्चुअली वेट हो रहा था कि तुषार जी लैंड करेंगे. हाँ मतलब मेरे साथ हुआ वैसा. अनप्लैंडली आई वाज कॉल्ड टू द सिटी एंड द सेम डे सिंस आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरा शॉट शाम को कुछ 7 बजे था, तो सुबह का पूरा दिन था. सो आई कॉल दिस एजेंसी, आई एम लाइक व्हाट डू आई डू नाउ. सो दे लाइक डू वन थिंग, यू गिव ऑडिशन इन आराम नगर, वहाँ पर कुछ एड्स के चल रहे हैं. आई वाज लाइक ठीक है कर लेते हैं, यही तो करना था हमेशा से. तो प्लस आज लेट्स सी. हाँ आई हैड माय फ्लाइट बैक द नेक्स्ट डे, तो मैंने कहा उससे पहले दे देता हूँ, क्या है वो देखी जाएगी. सो आई गेव 2 ऑडिशंस फॉर एड्स एंड आई गॉट दैट. मुझे दोनों एड्स मिल गई. वाओ. First day. Which means I know he's talented because I know him by now. Which means you know your job. Without actually, yeah, you know your job. Honestly, I'll tell you, ऐसा नहीं है. मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे सकता. It was very like I was lucky. Beginner's luck, I would call it. Okay, you being humble, I just feel like it was beginner's luck. You being modest. No, yaar, I didn't know how to give an audition. There were people there in that room much more presentable and experienced with this process. And I was very raw, new and don't know shit. मुझे audition देना भी नहीं आता था. So I still remember that day, the casting director was a female. She asked me ke she was a bit like harsh. Like, because there was a lot of people there that time. तो जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू हरी अप एंड यू नो मूव टू नेक्स्ट, लाइक जाके दो. मैंने कहा मेरे को मैम आता नहीं है. इट्स लाइक नहीं. तो फिर मैंने देखा कि वैसे बोर्ड लेके खड़े होते हैं, अपना एज हाइट ऐसा लिखने का और फिर साइड प्रोफाइल्स देनी है. सो मैंने वहीं से देखा मेरे से पहले वाले लड़के का ऐसे कर रहे हैं. सो आई जस्ट कॉपीड. अच्छा. आई जस्ट कॉपीड. गॉट इट. तो कुछ गलत किया मैंने, तो मेरे को वो बोलती कि तुम पहली बार ऑडिशन दे रहे हो क्या, तुम तो बहुत बार आते हो. मैंने कहा नहीं मैम, मेरे फर्स्ट टाइम, मैं आज बॉम्बे ही फर्स्ट टाइम आया हूँ लाइफ में. मुझे आइडिया ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे आया हूँ, मुझे पता ही नहीं है. मुझे प्रोसेस ही नहीं पता. मैं फर्स्ट डे बस घुस गया हूँ लिटरली ऐसे ही. आई वाज जस्ट लाइक पुश्ड इन द डीप ओशन. हाँ. And I had to pretend that I know my shit. Yeah, I know. You know, so I was faking it. कि हाँ आता है, कर लूँगा. आता है. तो ऐसा 1-2 लोगों को देखा, तो ऐसा सेम कर दिया जाके. तो उन्होंने बोला अपना नंबर दे दो, आपका ये
2 दिन बाद शूट है, तो मैंने कहा मैम 2 दिन बाद तो मैं तो दिल्ली चले जाऊंगा वापस. He's like क्यों? तो तुम शाम को एक बारी मीटिंग करनी है इसके डायरेक्टर से. मैंने कहा शाम को मैं शूट कर रहा हूँ. कह रहा तू नया आया है, कौन सा शूट कर रहा है? She thought I'm joking, like you know, like a lot of people fake it. I know. Like I'm very busy. Yeah. तो मैंने कहा नहीं मैम मेरा शूट है वो डाबर का. फिर मैंने मैसेज दिखाया. हाँ. कहते अच्छा ओके. So you don't go. Can you like postpone your tickets or something? मैंने कहा ठीक है I'll do it. हाँ. I shot those 2 ads. Wow. And the Dabur ad. And since then I'm here in the city. वो रिटर्न टिकट्स हुए ही नहीं कभी उसका. टच वुड एंड ना हो तो बेटर है. but that's I'm trying to process it actually because ये honesty काम करती है. You know, we can try be honest. All try be honest. You were honest with them कि सच में shoot है, message देख लो. I've always been honest. I have always been like that, and a lot of people have problem with me being too honest also sometimes. I've see it's helped me some way, but a lot of ways it's also not worked in my favor because I come across as too confident, and people have a problem with that. Is it a problem being It's too confident? Why? It's a problem. People think like you're just a little boy. How can you be so confident? How can you be so cocky? How can you be like, you know, I want to be a Bollywood hero. People have that issue because somewhere down the line I'm hitting their insecurity of being that confident person. Ego is the right word. Yeah. I don't know. Yeah. All these years here, I've met a lot of people from the industry and people do get ticked. कि तू कितने सवाल क्यों पूछ रहा है? चुपचाप अपना एड़ा खा और क्या बोलते हैं उसको पेड़ा खा एड़ा मत बन. एड़ा है ना? पेड़ा खा एड़ा मत बन. समथिंग ऐसी कुछ है ना? या क्या है? या पेड़ा खा एड़ा मत बन. बेसिकली आम खाओ गुठलियां मत गिनो. हाँ, एड़ा बन के पेड़ा खाना. हाँ. ऐसा. राइट. सॉरी. या. तो वो एटीट्यूड यहाँ पे चल रहा था. Wherever I used to go, I used to meet people, hang out with other actors who were also in the same boat. वो लोग सब बहुत ही डर के और ऐसे ना they were all behaving like robots. Like clones. सब लोग एक जैसे ही कपड़े पहनते थे. सब बाल भी सबके सेम. सब व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स. मेरा भी वही है. But everybody the same. And they all spoke the same way. Okay. So I was like, यार ये क्या है? में से तो नहीं. I am not feeling at home. Like at home. I've always stood out to be in my school or college or something. I was always the weird one. I'm happy being that because it's me. I am confident because I know my job. Yeah. And I'm asking questions because I love my job and I want to do the best I can. And ऐसा बोलते हैं अगर आप ज़्यादा question पूछ रहे हो, which means you're too much into it and you actually know it. Otherwise, you're clueless. If I just go there, stop asking questions, then what will I create? Exactly. If I need to create something, we have to collaborate. So I was always like that, always asking questions and giving my honest opinions. Okay, sir, this is what I feel like. ये वो बहुत डांट पड़ती थी और बहुत ऐसा होता था कि यार इसमें बहुत ये सवाल जवाब करता है, इसको ये बहुत एटीट्यूड है इसके अंदर. Moral down नहीं होता. I know what I'm doing. I'm not doing this because I'm trying to be something. Yeah. I'm doing this probably because maybe I have a better idea. Yeah, true. होता है. Because I come from theatre. I have years and years of experience of acting on stage, on camera, you know, like live nukkar natak to everything. I've written plays. You've done nukkar nataks and all? Yes, I've directed plays. I have written plays. That's how I grew up all my life in the theatre. You know, like my mom's from theatre, so I got that all my life. This is first-hand experience to that. Yeah. You know, storytelling just is like in my blood. And if it is, I'm very confident in saying that and giving. You should be. This is my skill. Yeah, exactly. This is what I know. If I know something, how will I present? Resume में वही डालेंगे ना जो आता है. हाँ, जो आता है वही बात करूँगा ना. अब मेरे को नहीं कोई और मेरे को गाड़ियों का शौक नहीं है. For example. Okay. I don't know how the engine works. This V18 मेरे को समझ ही नहीं आता. तो मैं नहीं बात करूँगा ना उस बारे में. You're like me. हाँ, I know. मुझे जो आता है मैं वो बात करूँगा. Yeah. So people have an issue, but it's fine. Now when things work a little, now they start taking me seriously, and they want to know. Okay, what do you think? So it's fine. It takes time. It takes time. It's fine.
By the way, Tushar has done more than 250 ads. किसी ना किसी ad में you ad खोलो and you'll see Tushar. And Barry John Institute, where you have done the course. Lajpat Nagar, Delhi. Yes, Shah Rukh Khan and Sushant Singh Rajput have studied there. Yeah. Am I right? Yeah. Yes, so well done. I didn't think like that, but Delhi में सिर्फ वही closest school मुझे दिख रहा था करने के लिए, so I did that. Okay, correct me if I'm wrong. I feel you're someone who always chase work as opposed to, I know वो एक feeling like you said कि जाना है superstar बनना है, but you are not ready to take the shorter route. You know, you want to work, you want to do good work and be known by your work, right? Of course. You are like that only. Yeah. That's a rare quality to have, and I'm glad you're like that. Yeah, I know what I want, and it's a very innocent dream. It's not like I'm here to compete with some falana damkana actor or someone's. I don't want anybody's place. I'm just here to create my own legacy. Right. Legacy. Legacy with my work. Wow. That's a good thing. I didn't come here to get into somebody's room or like work. I'm just here to create something new. Like how that's my love for the cinema and the craft. Right. That's why I survived so long and I keep fighting with all the rejections and everything, because I have a bigger goal. Otherwise I wouldn't be here standing in front of you today. After it's a difficult city to be in, it's a difficult profession. If I don't have that kind of an aspiration, then it's all a waste. Yeah, and 10 साल गुजारना is not a joke. It's not a joke. My peak years of my life to it. Yeah. Like my late teens to where I am today, my late 20s, I have just done this 24 hours. Wow. Prayed for it, worked hard for it, to create something new. To give people my voice. Like I have a voice. I want to tell my story, or I want to tell different stories to people. Your voice needs to come out. I can't do that by just being a clone. Yeah. It's just not me. I just don't feel comfortable. Wow. You're too real. What I feel. ये मैं compliment दे रहा हूँ, but you're too real. बात करते करते I never felt कि there is even this iota of any layer of filter which is there in you. कहीं कभी problematic हुआ है? बहुत. Because ये हो सकता है. I face that. Problematic. Like how? Why is it a problem? That's what. When you're too real, authentic, I feel you tap into those dark spaces into people. When you're talking to somebody at close, I bring out those those elements in them where they feel intimidated at some point because they're hiding those things inside them. Like some things I voice out unabashedly, like, oh, this is what I am. I know. Everybody wants to do that probably somewhere down the line. Yeah. They want to be confident in saying that I want to do this, but somewhere their self-doubt and self-beliefs or society norms or whatever is pushing them down to not say it. They're afraid to say certain things, and I voice it out because I'm fearless in that way. तो उनको लगता है यार हम नहीं बोल पा रहे, ये कैसे बोल सकता है यार, तू क्या नया लड़का आया है यार, हम 20 साल से हैं, तू 10 साल से. अरे बट ठीक है यार, मैं ऐसा ही हूँ. Yeah. But डर नहीं लगता कभी कि maybe because you want to work also, so don't you ever get feared कि यार थोड़ी सी फेकनेस सीख लेनी चाहिए वरना काम कैसे मिलेगा? और काम मेरे को फिर वैसा करना ही नहीं है ना जहाँ पे मेरे को फेक करना पड़े. अच्छा, तो रियल होके भी काम मिल जाता है? रियल होके ही मिलता है मुझे लगता है. अच्छा काम. अगर मैं फेक बन रहा हूँ, then I am portraying an image which I am not. I will attract those people who like that fakeness in me because they don't know the real me. If I am the real me, then I will attract people, and I will attract the people who want to work with me with who I am. With exactly. Yeah. Tushar Khanna. And then that work will be good. Very simple. Right. If I fake it,
then I'm attracting the wrong energies. You attract what you are basically. That's what. Yeah. Then I don't want to work with you. I'm sorry. Yeah. And if you like the fake me, then you don't have a great sense of people then. And if you don't have a great sense of people and authenticity, then your work is going to be shit. I know. You're gonna literally shit it out. But you know, I'm very surprised with the way you are. Sometimes, personally बता रहा हूँ, मुझे भी डर लग जाता है यार, कोई ये ना सोच ले, अबे तू है कौन? You know, तो काम भी करना and all that. Where does this confidence come from? Failure. मेरा ऐसा मानना है कि जब आप बहुत फेलियर देखते हो ना लाइफ में, I went through a lot of shit in life. I've seen a lot of struggle, hardships, rejections, heartbreaks. It just made me who I am today. It doesn't come from being Delulu. Is the Salulu is not for you. Delulu is not your Salulu. It comes from a lot of reality. Confidence does not come from success, because when you have a lot of success, then the delusion comes into the picture. Yeah. I know. then honestly nobody knows how to be successful. Yeah. You know, मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गया था. I should talk to a lot of people older than me, and I used to ask for advice. Nobody knows. Nobody knows. Everyone's faffing. I know. सिर्फ फालतू का ज्ञान सबको, जिससे आप ज्ञान लेने जाओ इंडिया में मुफ्त का मिलता है. I know. उनको सबको पता है कि कैसे करना है, ये करना है, लेकिन कर कोई नहीं पा रहा. और उनको खुद नहीं पता कि उनकी लाइफ कोई बिजनेसमैन भी ले लो उठा के. Nobody knows how it works. Yeah. Nobody knows. They just had a lot of self-belief and it worked. Nobody knows how. Like for example, I'll tell you, when I was new in the city, I used to tell people that I'm going to be a Bollywood hero. It's not like I happened to stumble upon it. मुझे रिएक्शन जानने हैं लोगों के. I used to say it. Okay. Out loud. How did people react? They used to laugh at me. अरे यार. हाँ, हम भी शाहरुख खान बनना चाहते हैं. तो बनो. ये रोका किसने? हाँ. कोई ये to you तो कोई ये भी नहीं कह सकता ना कि शक्ल देखी अपनी, because you look good also. नहीं, ऐसा नहीं है. बोलने को ना कोई आदमी कुछ भी कह सकता है. उनके जो सेल्फ डाउट्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती है, they try to थोप देते सामने वाले. हाँ, वो थोपने पे they always impose that on you. So I learned that at a very early age. See, it was very difficult to fight all that, because when you're young, you're not that strong to deal with these things, and you're not very self-aware. Once I grew older, I realized मैंने कर लिया जो मैं बोलता था. मैं आज literally वही लाइफ जी रहा हूँ जो मैंने प्लान करी थी. And you are a Bollywood hero. Starfish you've done. Yeah. And you were very good at Then that. people said TV मत कर. TV करेगा तो मूवी नहीं मिलेगी. I got it. Yeah. I did TV. I did film. And TV में your show was a hit. Pia Albila, I know. I think that was the first show. Yeah. Yeah, so it's for TV. I think TV has a very wide audience. Pia Albila के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है. Then I think you did some portion in Nagin also. Yeah. Right? Nagin 6, and then you cut to Starfish. Yeah. After that. Yeah. And you did web also. Yeah, I did everything. Short film. तो जब लोगों ने मुझे बोला कि ये करने से ये नहीं होगा, क्योंकि कभी किसी ने किया नहीं है या बहुत कम लोगों ने किया, तो वो लोग ना ऐसा स्टैटिस्टिक्स और डेटा पे चलते हैं. मैं डेटा पे नहीं चलता. Oh, you are like me that way. I hate running on data. करो. अरे तुम्हें करना तो करो ना यार. कौन कहाँ पे लिखा है ऐसा कि शाहरुख came from television, Sushant came from television. Exactly. You know, Yami Gautam came from television. I did television and I did a film. Yeah. Who says it can't happen? जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते ना, और जो हारे हुए लाइफ में, I feel sorry, but वो लोग तुम्हें मना करते हैं, ये मत करो, वो ना करो. अरे तेरा नहीं हुआ तो क्या दूसरे का नहीं होगा क्या यार? मैं मेहनती आदमी हूँ यार. I'm here to give something. Exactly. If they want my skills in that project, no matter if it's on television, on OTT or a film, they will hire me. Yeah. Because they like my work. Yes. That's it. And It's as simple as that. हम लोग लोग unnecessarily complicate कर देते हैं. We want to be simple. Tell me something. मैं ना एक वेब अभी कल ही मैं फिर से देख रहा था actually, Romantics करके एक वेब डॉक्यू सीरीज Romantics, yeah, you know. उसमें there was this line someone was saying it कि
it's easier to enter the industry now as opposed to in early 2000s because अभी बहुत streamlined है casting process. For someone like you who entered in 2015, I want to know because you'll have first-hand experience, of course. So, is it actually easy? Because उसने क्या बोला कि आप जाओ अभी casting agency से वहाँ जाओ, audition दो, काम मिल जाएगा, अच्छा हुआ तो, and is that simple? Is it that simple? It's simple, but it's more complicated now. I feel. आजकल numbers बहुत देखे जा रहे हैं. Trust me. Casting process में. Casting process में numbers मतलब? जैसे पहले in 2015-16 हाँ. before Insta social media era, we were just based on how we look like and how we act, and we fit the part or not. Simple. Like not just like how good looking you are, but if you fit the part, the character. It was as simple as that, and then other things were always there and it will always be there. Today, it's not exactly if you fit the part or not. It is if you fit the part and how many numbers do you have on your Instagram. Yeah. It's the sad reality. If you see all the projects. What if people buy those numbers? People do that, of course. Yeah, of course. Yeah, we all know that. But that's so sad, yeah. मतलब, it's very sad actually. People buy a lot of things. People buy PR. People buy fake hype, bots, commenting, I know. keyboard warriors and all. I know. Everything is bought. How do we know digitally what is authentic now? मतलब अभी सब perception पे चल रहा है. Yeah. But do you think perception last करता है? I don't think so. I think whatever rises up too quickly will fall as bad. That's what I feel. That's correct. That's correct. Because people see through. People are not dumb. Audience is very, very smart. Extremely smart. And now very smart. With social media, a little kid also has access to a phone. Yeah, I know. उसको सब पता है. Yeah. You know, like, they're very smart. They can see through people. कि यार क्या है, कहाँ से आया है, क्यों बोल रहा है, क्या नहीं है. People comment. If you see, read comments. People read comments. Very funny. I love reading comments. Yeah. वो एक होता है Instagram fame और एक होता है actual fame. Yeah. You know, मतलब मैं उस दिन बैठ के ऐसे analyze कर रहा था, how do I define it? Then I realized one is called social media fame and one is called actual fame. Which is very different. Which is the real fame actually. Yeah. If you go out in public, if people are not gathering there, then you're not famous. Yeah. And for that matter, there are a lot of people who are there on मतलब you know reels चल रहे हैं, viral जा रहे हैं, and हम सबको पता है reels कैसे viral जाते हैं. वो इंसान अगर किस गांव, इंडिया के किसी गांव में जाएगा या जाएगी, people will not recognize. But at the very same time, I'll take a very simple example. If Rakhi Sawant goes, everyone knows her. Because she's been working since a really long time. Exactly. We've been watching her since we were kids. I know. So it takes time to build that kind of an aura and that fan following and recognition. Yes. After doing a lot of work. Yes. It doesn't come with one film, yaar. Yeah. It doesn't come with one project. Not even film, because बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जो नहीं देखी होती लोगों ने. यहाँ पे फिर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. The box office numbers, fake collection, जो हो रहा है, like let's be honest, जो हो रहा है, I can say it aloud. उसके बाद, but then वही फिर वो Instagram fame मिलता है. No, but my problem is, and I want to understand this. मान लीजिए, if for example, कल को जाकर if you होता है ना, बॉट्स खरीद लिए, कमेंटिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, यू विल गेट मनी आल्सो ना, बिकॉज यू विल गेट एड्स. See, brands get fooled with this because they think they are working. हाँ. But एक बार ad जब चलाओगे तो पता तो चल ही जाएगा ना. Engagement कितना आ रहा है. And plus, I think Instagram fame is also very short-lived. These reels का, you don't remember their faces, yaar. You will watch a viral reel, you will probably share it with your friends or something, and then it's just you forget about it. It's जितना ऊपर जल्दी जाता है, it's like mercury. Yeah. It'll come down as quickly. You won't even remember it. If you watch a good film, it will be an impact. So long format. Yeah. जो videos होती है, storytelling होती है, it will that's why it has a different space. Yeah. Because you connect emotionally deeply with that thing. You know, and they are able to hold you for a longer duration of hours.
that means they worked harder probably. Yeah. I don't know, but they've connected to the audience. मतलब ठीक है, it takes a while to reach there, to get that kind of connect with the audience. तो वो इंस्टा पे ना थोड़ा क्या है, short lived type का है, चुम चुम छक टक खत्म. I know, दूसरा कोई आ जाता है. हाँ. Yeah, I know. But then what's the way out? Because here money is making money. You know what I'm saying? Yeah. पैसे से आप पैसा बना रहे तो हो. हमेशा से हो रहा है. But अभी दिख ज़्यादा रहा है because of social media. But then how does someone like you, who actually wants to tell good stories and who is creative enough, make your space? First of all, be a date. हिंदी में बोलते हैं चिकना घड़ा. एक कहानी हाँ. कहावत है, चिकना घड़ा. ठीक है. सेल्फ बिलीफ बहुत Yeah. स्ट्रांग होना चाहिए और जिद्दी. हाँ, ये तो एक मतलब एक बेस स्टोन तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए. Because there are a lot of other people who want to do the same thing and they have different accesses to things that you don't have. Okay, and you're not here to compete with them. So you see what you have. I feel. जिसको स्टोरी टेलिंग करनी है वो इंस्टा पे फ्री में भी कर सकता है ना. Yeah, exactly. Right? A lot of content Nobody's creators stopping. are doing these days. Nobody's stopping them. Exactly. They're doing really well. They're getting their brand deals. They're doing better than a lot of actors I know today. Self-made people. They don't have people backing them, promoting them. No PR gigs happening. उनका content अच्छा है तो चल रहा है. I am following so many creators now on Instagram. I love them. I love the way they think about life. And like there's some very 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 good people. तो उनका एक अपना जोन है, वो अपनी तरीके से स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं. आज YouTube पे आप अपना चैनल क्रिएट करो. हाँ, and you can talk about things that you know about. You your have a voice, skills. basically. You have a voice. Yes. If you have a skill, you mastered a skill, you can talk about it on social media. Yes. And people will love it if you're giving They'll some watch value. it. Yeah. If you're creating some value, this is my advice that somebody who's starting new should master a skill first. Okay. Don't look for that recognition and fame because that's short-lived. Yeah. It's a scam. ठीक है, like now you're young and all and you want that attention, female attention probably, and you want to be that popular guy or girl in school or college. But after a while, if you're not giving any value to people, they will not invest their time in you. If they'll not invest their time in you, you will not create a legacy. They will not be like you're, indispensable. हाँ. If you want to be irreplaceable, you want to be unique, you have to master a skill. Right. One skill. Right. Keep mastering. It takes time, dedication. I know a lot of times I had in my life where I've been all alone in my room, cribbing, crying, and with my notebook. It's a dark, dingy room, and I'm like, yaar, maybe I don't have it in me. Really? होता A है. lot of times that comes. Okay. Yaar, my phone's not ringing. Probably I'm not doing enough. I'm not doing something right. But then you just throw your phone like, "Arey yaar, tomorrow is another day, Yeah. and this is what I need to do, Right. and I'll keep doing it Right. until I master it." Right. So this has to be there. I feel. It should be. You know what this reminds me of? You have to work on yourself, and you keep working on yourself. So, are you working on yourself? Of course, I am working on myself. Are you living? I am a liver. You're in touch. You're friends with Ori? Yeah. Oh, so you have friends in the industry? Yeah. Like It's been 10 years. Acquaintances. Like, Okay. like we know each other. Obviously, अब 10 साल हो चुके तब तो बन ही जाएंगे. Okay, so I really want to know what does Ori do? मैं नहीं जानना चाहता, सब जानना चाहते हैं. और ये सीक्रेट है, उसने मुझे मना किया बताने के लिए. He's actually a raw agent. Yeah, I'm serious. Okay. He's a raw agent. एक था टाइगर, एक था Ori. Yeah. Okay. और कौन-कौन से सीक्रेट्स हैं मुझे जानने हैं. Joking. Trust me, no one is watching. No, he's a very smart guy. He's a marketing genius. मुझे actually इस पे आना था. How did Ori become Ori? Because again, it's like
You know, एक इंसान आया suddenly. No, but he has that quality, you know, like he's very confident. If you see him, he does not give a Yeah, I know. That's true. That he doesn't give a damn. he knows what he's doing, and he's confident. He's unique. He's not like any other clone out there. So people like him. He's very likable. If you meet him, he's a very likable guy. You know, he's very sweet and confident at the same time. Cute little guy. Ah, yeah, I love him. I just want to pull his cheeks and like. I know, cute, sweet guy. Him and his minions. Yeah. But you know, the best part was when Ori came to coffee with Karan Johar was in shock. मुझे दिख रहा था not shock. मतलब when he was saying and then there it was Karan Johar and he was worrying. He's like, you know, एक होता है different लोग मिलते हैं. Coming back to you said he's a marketing genius. Do you feel marketing, PR, managers, all of us know now, there's nothing new in this, but is it important for actors? Yeah. Of course, because you're a product at the end of the day, and how will your product reach to people? You know, if you need to market it, you need to tell who you are. Otherwise, people won't know you. Yeah. And if they don't know you, how will they cast you? Yeah. Or how would they connect with you? How would they know what you stand for? So I'm not saying it's really like it's the biggest chunk of the importance levels priority wise, but it's a leg that's really important. But इसमें फर्क पड़ता है, like if you have a good PR, I know I don't have a PR. Exactly. You. I lack here. And that's what I wanted to ask because I don't think you're doing much over there. I'm not doing anything. मतलब मुझे पता है बहुत important है. That is somewhere I lack if I see. But somewhere if I don't have anything to say, I don't want to just come out there and just be a Barbie doll. Yeah. You know? Yeah. I just don't want to pose for the cameras for the sake of it. Until unless I have a voice, I want to tell something. You have something to say. मेरे को बहुत ऐसा अजीब लगता है. मुझे बहुत अजीब लगता है ऐसे जाके हीरोगिरी करना कैमरा पे जब कुछ है ही नहीं बोलने के लिए. तो क्या करूँगा यार? अरे आपके बाल अच्छे लग रहे हैं. अरे आप इस पे बताओ. अरे कुछ ओपिनियन ही नहीं है मेरा यार. मैं सीख रहा हूँ अभी. I'm still figuring out what I want to do. I'm learning about myself, who I am as a personality. What is my voice? So until unless I don't find that, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था उस टाइम पे. मतलब पहले इससे पहले इंटरव्यूज देने कि मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ यार. I was still figuring out and I don't have an embarrassment in saying that. I was learning. I'm still learning, but right now I feel I can talk about certain things, so I am. But now I feel, so we just connected. I asked Tushar, let's do this. He said yes. And there was he was nice and kind enough. There was no mediator involved. But I feel this time you are more raw and yourself as opposed to the earlier times. Yeah, it comes with experience. I feel you. Yeah, कब तक you'll hold back? I know. You've always been raw. Like, let me correct that out. You've always been real. But what I'm trying to say is, when there are mediators involved, I think your voice gets a hold. Yeah, probably, but I don't want to blame anybody for that. Maybe I wasn't ready enough. Acha, okay. I will say that. Maybe I wasn't in that space where I wanted to talk about certain things or myself. I don't know. That's आज है. तब आगे पता नहीं. You don't know my next move. Yeah. कोई फायदा नहीं. He's very smart that way. Actually, again, I think, okay, correct me if I'm wrong. I think you're also learning to be smart. I don't know how to learn that. I don't think I'm smart. Do you feel you need to be? I don't know what that means. शाना. बहुत अलग मतलब हो सकते हैं. Please don't kill me. But what I'm trying to say is शाना. Yeah. I don't know if that works. मुझे नहीं पता कि कौन शाने के साथ मैं कनेक्ट किया था last time. अच्छा. Yeah. Like you said, like right. If I'm not relating to anybody,
then what is the point? Yeah. But does work? Some people probably at short term में help जरूर करता होगा, but मैं यहाँ थोड़ा पीछे रह गया. Lobbying करना. हाँ यार, यहाँ मैं थोड़ा वीक रह गया. अच्छा. ये मुझे ना किसी फेक तारीफ करने नहीं आती, और मुझे ऐसा दोस्ती करने नहीं आती है कि यार मैं इनका ग्रुप का पार्ट हूँ, एंड इनकी मैं झूठी तारीफ कर दूँ, ऐसे ये वो, तो मेरे को आता ही नहीं है. शायद मैं इसीलिए एकदम अलग से दिखता हूँ, तो मुझे ये आता नहीं. मैं पार्टी वार्टी नहीं करता. अच्छा, आई डोंट पार्टी. पार्टीज में कास्टिंग नहीं. आई डोंट ड्रिंक. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं करूँगा क्या वहाँ जाके. तो वहाँ जाके मैं अपने डाइट को क्या ऐसा रेड बुल पीता था, तो 2-2 3-3 रेड बुल हो जाती थी. इट्स नॉट वेरी हेल्दी. आई वाज लाइक यार क्या, बिकॉज नींद आती थी ना, इतना शोर हो रहा है. आफ्टर पॉइंट यू नॉट ड्रिंकिंग एंड लाइक नॉट एंजॉयिंग लाइक दैट. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? आई डिड दैट, बट देन आई अंडरस्टूड दिस इज नॉट माई स्पेस. आई कांट डू स्मॉल टॉक. इतना शोर होता है, बात भी नहीं कर सकते. एक्चुअल में अगर आपको किसी के साथ नेटवर्क भी करना है, यू वांट टू कनेक्ट विद समबडी, इतने शोर में आप कैसे रियल टॉक तो नहीं हो सकता. तो वहां पर कास्टिंग तो नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, मैं वही पूछ रहा था. कनेक्शन, नेटवर्किंग से काम नहीं मिलता. किसी को मिल रहा है तो भाई ठीक है, उसको सही है, बट वो सही पार्टीज में जा रहे हैं शायद से. आई डोंट नो. पता नहीं यार, ये सब स्टोरीज आती है ना कुछ एक्टर्स की. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो. पार्टी में स्पॉट कर लिया, ये सब बकवास है. अच्छा, ओके. अगर पार्टी में स्पॉट हो गए, तुमको कास्टिंग मूवीज मिल रही है ना, तो भाई तुम देख लो फिर क्या चल रहा है बॉलीवुड में. दैट इज आल्सो ट्रू. तो मतलब वो कास्टिंग डायरेक्टर्स जो इतना स्टूडियो लेके बैठे हैं वहाँ पे, और इतना दे वर्कड फॉर इट यार, दे नो देयर जॉब. तो तुम उनको क्या बोल रहे हो? तुम बेवकूफ हो. तुम पार्टी में कास्टिंग करो तो पार्टी करो फिर जाके. तो हम पागल है यहाँ पर इतना प्रोफाइल ये दिखा रहे हैं और जाके पार्टीज में और अपना ऐसा ऑडिशन की लाइंस प्रिपेयर कर रहे हैं, कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं. मतलब ये क्या, ये प्रोसेस मतलब झंडू है. एग्जैक्टली. स्लेट पार्टीज में ले जाते हैं डायरेक्टली. तुमको एक ये टेबल पे नाश्ता हुआ, किसी को देख लिया और बोला अरे ये मेरे मूवी का नेक्स्ट हीरो है. It's bullshit. It doesn't happen like that. These are all PR made stories यार. Don't fall into it. I want to tell this to every person who's listening this interview right now, who's watching this in smaller cities and all, because उन लोगों को तक real information नहीं पहुंचती है. Casting parties में नहीं होती दोस्तों. काम करो, काम से मिलती है. आई नो. टेबल पे नाचने से तो बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. या बट पीपल फॉल फॉर इट. हाँ यार, मतलब दे एक्चुअली फॉल फॉर इट. कितने स्टोरीज आते हैं, व्हाट आई एम सेइंग, राइट? कितने स्टोरीज आते हैं. दे व्हाट टू से, आई मीन कोई अच्छी स्टोरी बताओ यार, बिलीवेबल तो लगे. हमने बहुत पार्टी करी है यार. हमको तो ऐसा कोई किसी ने नाश्ते में देख के नहीं बोला अरे तू मेरी फिल्म का नेक्स्ट हीरो है, तेरे पे मैं 20 करोड़ लगाऊंगा. It's a lot of money to launch somebody. Exactly. So many crores lined up. You can't put money on a person who's dancing on Bollywood songs in a party. Yeah. This is so stupid. I know. And that too when you're also now 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, you're now connected with I think a lot of good directors and filmmakers. So I'm sure you go and meet them and whenever you go to the parties, whenever you used to, and I'm sure you have that first hand experience कि ऐसा नहीं होता है. Yeah. It takes a process. फिल्म बनने में बहुत चीजें लगती है. It's a long process. A lot of people get employed. A lot of money is involved. The process it's a very tedious process. लोगों को लगता है ऐसे जादू है यार, आके तुम नाचे और तुम कास्ट हो गए, तुमको लॉन्च करे, तुम हीरो बन. ऐसा कुछ नहीं होता है. It's like any other job. It's work. It's a lot of hard work. Right. And fake stories, not fake stories actually. Stories से मुझे याद आया. Another point I wanted to discuss with you was you are an outsider. Do you feel कि अभी you are a real outsider. Do you feel एक outsider वाली स्टोरी बेच के फिल्में चलाना आसान होता है? हाँ यार, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते ऑडियंस को. अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी डायरेक्शन, अच्छी एक्टिंग से ही अच्छी फिल्म बनती है. और जब अच्छी फिल्म बनेगी, आपकी मूवी देखने लोग आएंगे और अच्छी लगेगी उनको, तो अच्छी बातें करेंगे. तुम अब इसका हैक ढूंढने लग जाए ना कि ऐसा कुछ लिखेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, तो कभी नहीं. इट विल नेवर वर्क. आउटसाइडर एंड स्ट्रगल्स, दो हैक्स आई एम टेलिंग यू. मैंने अपने स्ट्रगल के बारे में कोई बात ही नहीं करी. You should. हाँ. Because I was like, मैं स्ट्रगल मानता ही नहीं हूँ. I came here because I wanted to come. You chose this life.
I wanted to be in the movies. So I came here. Nobody forced me to go through all the pain and whatever I went through. And who doesn't go through pain and, you know, like those moments of transformation? And how will you transform into a better human or a person you want to be without that, the problems? And that's there in every profession. Every profession, Yeah. तो लोग ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं ना अपने स्ट्रगल को यहाँ पर आके, वो भी मेरे को बिल्कुल ऐसे पसंद नहीं आता. I know. I'm like, ठीक है, तुमको किसने बोला था आने के लिए, मत कहो यार. Exactly. And कुछ स्ट्रगल्स तो सुन के लगता है कि काश हमारे भी यही स्ट्रगल्स होते हैं. No, but I know what you're saying. Tell me something, for a person like you, लोग बोलते हैं कि I'm saying for an actor like you, not a person, लोग बोलते हैं कि भी OTT के आने से काम बढ़ गया है, मिलना थोड़ा सा आसान हो गया है. But do you feel, I sometimes analyze कि अभी the OTT space is also dominated by वही जो बड़े you know the studios and production houses जो फिल्मों में they've shifted to OTT and now the same things happening over there. सी कॉर्पोरेट आ गए हैं OTT और इस पे सब स्टूडियोज में, तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन गया है, तो वो सब नंबर्स पे चलता है. आई डोंट थिंक आसान या मुश्किल, एवरी यू नो टाइमलाइन में सब कुछ मुश्किल है, सब कुछ आसान है. पहले कुछ और प्रॉब्लम्स थी, आज कुछ और प्रॉब्लम्स है डील करने के लिए. तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले अलग तरीके की प्रॉब्लम्स थी, यू नो, टू गेट योर नेम ऑन दिस थिंग. आज अपना नाम बनाना ज़्यादा आसान है विद इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, पर वो काम मिलना, वो रिस्पेक्ट लेना, वो उतना ही मुश्किल तब भी था और आज भी है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई फील. नाम कमाना और ऐसा एकदम से इंस्टेंट पॉपुलर हो जाना, बहुत फ़र्क है. I know. बहुत फ़र्क है. I know. आज हम जिन एक्टर्स की बात करते हैं, मनोज वाजपेयी, नवाज अनवर, they work their ass off. I know. They've done a lot of hard work. अच्छे एक्टर हैं वो, उनकी मास्टरी है एक स्किल पर. अब वो चाहे OTT पे काम करे, चाहे फिल्मों में काम करे, आपको पता है वो अच्छा काम करेंगे ना, तभी आप जाते हो देखने के लिए. Yeah. तो ये मुझे नहीं पता कि आजकल लोग एक्टिंग को छोड़ के बाकी सब कुछ क्यों कर रहे हैं. क्या एक्टिंग करो ना, तुम एक्टर हो. I really want to say this to a lot of people, but yeah, that's true. Tushar, कभी ऐसा हुआ है that your looks became a problem? Because I feel you are, you know, you're a good-looking person. There's no denying to the fact. अगर मैंने ना बोला, लोग यहाँ मुझे मार देंगे देखने वाले. So that's the fact, right? But sometimes ऐसा problem बना है वो. Double-edged sword, I feel. There's some places it's worked in my favor. Some places it's not. How does it not work? यार इतनी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है ये कि मेरे को बोलने में एम्बैरेसमेंट हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ प्रॉब्लम टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स बिकॉज आई एम टू मच सेल्फ क्रिटिकल अबाउट हाउ आई एम, हाउ आई लुक लाइक. मुझे मेरी शक्ल पसंद ही नहीं है. Does someone have a knife or something? I want to kill you. No, sorry. With these things I'm very shy. हाँ. I'm very confident about my work. अच्छा. Okay, being very frank. I'm very confident with the skills I've developed, I worked on. Looks is something I didn't work hard for. You're born with. This is what my Parents. mum looked like. Okay. And because of that I got her features. Right. इसमें मेरा ना कुछ योगदान नहीं है. हाँ. तो मैं इस चीज़ को लेकर अपना गुरूर बना लूँ और उस पर मुझे बड़ा अजीब लगता है यार. I can't be confident about something which I did not earn. You know, बड़ी मिडिल क्लास मेंटालिटी है यार कि ये मेरा कमाई हुई चीज़ नहीं है. हाँ, मैं जिम जाता हूँ, I work hard and all there. Grooming is there, yeah. I had a good base to begin with, right? Like I had a good looking mother to give me this probably, so I can't take credit for it. Yeah. I can only take credit for the work I have done. मैंने उस पर बहुत मेहनत करी है यार, बचपन से कर रहा हूँ. ठीक है, तो मेरे को एक्टिंग की तारीफ करता है ना, मुझे लगता है हाँ बोलो आप प्लीज और बोलो. वो सीन कैसा था? I know. You know, so it is that. अब मेरी शक्ल की तारीफ करता है या ऐसा बोलता है, मुझे लगता है कि
हाँ ठीक है, thank you, but okay. So what? Okay, thank you, but I don't know how to take it. Yeah. I know, and I know what you're saying. तो काम मिलने में थोड़े इश्यूज ये होते हैं कि आई डोंट फिट इन ऑल रोल्स, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ऐसा दिखता है. Rich looking brat. या I know. मैं रिच भी नहीं हूँ. अब brat भी नहीं हूँ. ब्रैट तो मैं हूँ. अच्छा, okay. ब्रैट तो मैं हूँ. I like to live life confidently and being a brat. Yeah. मैं अपने माँ बाप का एक लौता बच्चा. एक लौता ब्रैट हूँ. Brat हूँ. और मुझे अच्छा लगता है वैसा रहना. So sweet. जरूरी थोड़ा ना रिच होना जरूरी है उसके लिए. Yeah. रिच मैं अपने खुद से हो रहा हूँ अपनी मेहनत से, तो मैं अपने आप को ऐसा पैम्पर करता रहता हूँ. तो ठीक है. But you can't take away what work I do with that. Obviously. This is just how I like to live my life. I like to live a very confident, stress-free life. On my terms. On my own terms. मुझे रात को बड़ी अच्छी नींद आती है. I'll sleep like a baby. just how it is. That's something. Okay. Nice. That's a nice thing. तो अभी क्या चल रहा है? क्या आ रहा है? What are you working on? So I'm working on a couple of films right now. I'm producing 2 films. You're producing. Yeah. You're producing. Yes. You're producing. Yeah. Wow, that's a good thing. Like that's actually very good to hear. For someone who's come from outside and then you take a charge. No, because the kind of movies I want to do, I don't see them getting produced. Okay. Achha. Okay. Not because I mean even if they are, it's not coming to me. Okay. The work I want to do. Okay. And some scripts have come to me in the recent times which I love. I love the script. And I wanted to tell that story. So I reached out to a lot of people I know, and we're all collaborating in getting this project on board, so we can put it on screen for you guys to watch it. It's as simple as that. I mean, producer naam bahut bada hai, I understand. It's a big responsibility, but I'm not doing this by myself alone. I have a team. I've created a lot of people, like-minded people who want to work for the same thing. Yeah. So we're all producers. Okay. We're all working for creating something. जैसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, Get it. Yeah. हम बस लॉन्ग फॉर्मेट बना रहे हैं. Film creators. ऐसा इतना बड़ा मुझे वो नाम देके ऐसे वो मत दो यार, प्रेशर. Producer actor एक टैग लग जाता है. टैग नहीं चाहिए. मेरे को अगर कोई फिल्म अच्छी लगती है, आई विल डू माय बेस्ट उसको बेचने के लिए आगे जाके कि प्लीज ये मूवी बनाओ. You're acting in it also, right? या हाँ. Okay. ऑफ कोर्स मैं एक्टिंग करने आया हूँ यहाँ पर. Yeah, exactly. अब मेरे को जो मूवी बनानी है वो नहीं बन रही, तो आई कोई हैव नहीं टू टेक बना चार्ज तो ऑन खुद ही अदर बना लो. थिंग्स. हाँ, I know. हाँ. I अगर get आप लोग मुझे कास्ट करोगे अच्छी फिल्मों में, तो मैं ये वाला पेन नहीं लूंगा यार. I know. It's quite a task to be a producer. Yeah. Right. When is it coming out? Next year. Next year. Yeah. Okay. So obviously you are reading scripts and all. So, do you feel good things are not being offered to you, or good things are not being made only? Both. अच्छा. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग ना नंबर्स चेस कर रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं इंडस्ट्री में अभी, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट्स वर्किंग. ठीक है, रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो गया. लोग ना ऐसा कुछ हटके काम बन नहीं रहा. जहाँ पर आप एक नया लड़का ले और लाइक कहीं पे एक्सपेरिमेंट करें किसी के साथ, वो चीज़ें बहुत कम हो रही है. साल में एक. और जो मेरे को मूवीज ऑफर हो रही हैं यार, वही सेम तरीके की चीज़ें हैं जो मैं कर चुका हूँ शायद, या वहाँ पर मेरे प्रॉपर एक्सपर्टीज जो जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं. इट्स गोइंग वेरी फ्लैट. इट्स जस्ट बेस्ड ऑन हाउ आई लुक लाइक. वो होता है, गुड लुकिंग पीपल के साथ वो प्रॉब्लम आती है. सो आई वांट टू गो बियॉन्ड इट. I know, but I know that's actually the first world problem, but that is a struggle. I know that. ठीक है, सबके अपने स्ट्रगल होते हैं. चल ठीक है, आएगा नेक्स्ट जो फिल्म आएगी उसमें देख लेना भाई. Yeah. Okay. No, but it was. I know your journey, so I know he's a really hard-working person. I know he's someone,
like you said, who wants to tell good stories, and looks के पीछे भी देखो because वो होता है. I'm saying again and again looks because I'm sure I know this happens to you sometimes, but then yeah, it's okay. वो होता है ना, gradually you will go up, then you stay there. Probably Let's hope for the best, and all the very best to you. Thank you. It was such a pleasure talking to you, and I hope we meet again soon for Of course, yeah. your next project, or we keep meeting for your upcoming projects. 100%. And just surprise us more without telling your next move. Yeah, keep waiting. Thank you so much. Thank you so much for joining us. Thank you. It was a pleasure talking to you.